Good morning students. Today we will start new chapter, that is probability. As we have already discussed in 8th class, what is a probability? Probability means chance of an event. For example, if we will toss a coin, either head will come or tail will come. So we get two outcomes, either head will come or tail will come. Now, if you find out the probability of head, then what you have to find out? Favorable outcome is 1, whether head is come or tail is come, favorable outcome is 1 and the total number of outcomes are 2. So, the probability of an event is 1 upon 2. Now, what is the formula to find out probability of an event? That is equal to number of trials in which the event happened upon total number of trials, or we write as number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Now, the most important, probability of an event always lies between 0 and 1. It is neither negative and not greater than 1. It is always lies between 0 and 1. And the sum of all the probabilities is 1. Now, if the event is 0, the probability is 0, then it is called impossible event. If the probability is 1, then it is called sure or certain event. Now, we will start exercise 15.1. The first question, in a cricket match, a batsman hit a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she didn't hit a boundary. Now, we have to find out the probability that she didn't hit a boundary. Now, he hits a boundary 6 times. So, didn't hit a boundary. First, we have to find out didn't hit a boundary. That is 30 minus 6, which is equal to 24. Now, we have to find out the probability didn't hit a boundary. That is favorable outcome upon total outcome. Now, favorable outcomes are 24. And how many balls she plays? She plays 30 balls. So, 24 upon 30, that is equal to 4 upon 5. Is it clear? Look at second question. 1500 families with two children were selected randomly and data were recorded. Number of girls in a family. It is given that number of girls in a family. जिस family में 2 girls हैं, तो वो कितनी है number of families? 475. Now number of girls in a family जिसमें 1 girl है, तो वो कितनी families हैं? 814. और number of girls in a family जिसमें कोई भी girl नहीं है, तो वो कितनी families हैं? 211. Now we have to find out the probability with 2 girls. मतलब family में 2 girls हों, वो उसकी probability find out करनी है. देखो बेटा, total number of families कितनी है? 1500. अब 2 girls कितनी families में है? 475. So the probability of with 2 girls, it is favorable outcome upon total outcome, that is 475 upon 1500. Now probability for one girl, having one girl कितनी families में है? 214 upon 1500. And probability having no girl, जिस family में girl नहीं है, तो कितनी है? 211. It means 211 upon 1500. You have to cut it or simplify it. ठीक है? Is it clear? Now, my dear students, look at fifth question. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. An organization 2400 organizations families select किए एक organization ने and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. उन्होंने सर्वे किस चीज़ का किया है कि relationship between income level की कितनी income है और उनके पास कितने number of vehicles है, उस family के पास कितने number of vehicles है. Now the information gathered is listed in the above below. तो बेटा information दी हुई है. This is the table. मंथली इनकम इन रुपीज. अब फैमिलीज की मंथली इनकम जिसकी लेस देन 7000 है, उसके नंबर ऑफ व्हीकल्स बताया कि पर फैमिली. देखो 0 व्हीकल्स कितनी फैमिलीज में है जिनकी इनकम 7000 से लेस है, तो 10 फैमिलीज में कोई भी व्हीकल नहीं है. 1 फैमिली में 1 व्हीकल कितनी फैमिलीज में है? 160 फैमिलीज में. 2 व्हीकल्स 25 फैमिलीज में. अबव टू 0 फैमिली में. ठीक है. फिर 7000 टू 10000 का ऐसी डेटा दिया हुआ है कि 0 व्हीकल्स 7000 टू 10000 फैमिली की इनकम है और 0 व्हीकल्स कितनी फैमिलीज में है? 0 फैमिलीज में. व्हीकल 1 व्हीकल
305 में, 227 में, अबव टू 2 में, ऐसे ही बेटा पूरा फुल डेटा दिया हुआ है. नाउ सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. अब हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ. अब देखो 10,000 to 13,000 पर मंथ है एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और 2 व्हीकल्स एग्जैक्टली दैट इज 29. देखो अब कितने हैं, 2 एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कितने में है, 29 में है बेटा. नाउ how to find out, how we have to find out total number of families is 2400. Now probability earning ₹10,000 to 13,000 per month and earning exactly 2 vehicles, कितनी families में है, 29. So answer is 29 upon 2400. Now the second we have to find out probability earning ₹16,000 or more and owning exactly 1 vehicle. 16,000 or more में 1 vehicle 579 families में है, 579 upon 2400. Now the third one is probability earning less than ₹7,000 per month and does not own any vehicle. Less than ₹7,000 10 families में जिसमें कोई भी vehicle नहीं है, तो आंसर इज 10 upon 2400, कट इट, that is 1 upon 240. Now the fourth one is probability earning ₹13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. Owning more than 2 vehicles, 13,000 to 16,000. How many? 25. So the answer is 25 upon 2400. Now cut it. Okay. Now the fifth is probability owning not more than 1 vehicle. Not more than 1 vehicle बेटा, ये अब इसमें देखो अर्निंग नहीं बताई हुई, सिर्फ ये बताया कि नोट मोर देन. ये लुक एट द टेबल 0 to 1. देखो 0 and 1 वाले सभी को ऐड कर दो. अब ऐड करके हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 2062. कितना आ गया, 2062. 2062 अपॉन 2400 विच इज इक्वल टू 1031 अपॉन 1200. Is it clear? Now we will discuss question number 7. To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Opinion: like is number of students 135, dislike कितने कर रहे हैं 65. अब देखो 200 स्टूडेंट्स का हमने कंडक्ट किया, ठीक है, डेटा लिया कि कितने लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, कितने डिसलाइक करते हैं. लाइक कितने करते हैं 135 और डिसलाइक कितने करते हैं 65. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, कितने स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं और कितने डजंट लाइक करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो बेटा. अब कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 200, probability like statistics is 135 upon 200, then cut it, it is equal to 27 upon 40. Now probability does not like statistics, 65 upon 200, that is 13 upon 40. Is it clear? Now look at 11th question beta. Look at 11th question. 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour in kg. तो ये डेटा दिया हुआ है कि 11 बैग्स में ईच मार्क 5 kg, जिसमें 5 kg है, बट उसमें एक्चुअल फ्लोर कितना है. एक फर्स्ट बैग में 4.97 है, सेकंड में 5.05 है, थर्ड में 5.08 है. ऐसे पूरा डेटा दिया हुआ है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर. अब हमने प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है जिसमें 5 kg से ज्यादा फ्लोर है. देखो बेटा, अब आपके पास डेटा है, data is given that is 4.97, 5.05, 5.08, 5.03 and this is given. Now देखो किसमें ज़्यादा है, first 5.05, then 5.08, then 5.03, then 5.06, 5.08, 5.04, 5.07. तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 बैग्स में, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 7 upon 11. Is it clear? Now thank you and have a nice